types of manures. These are divided into three. First is FYM, that I'll tell you later what is its full form. Second is compost, and third one is the green manure. First, FYM. FYM is related with your farm yard manure. As its name indicates, farmyard manure is prepared by using whatever waste is released from the farm. ठीक है, फार्म से क्या क्या निकलता है एट द टाइम ऑफ विनोइंग, मीन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, व्हाटएवर प्लांट हस्क या क्रॉप हस्क इज रिमेन दैट इज बीन यूज्ड, देन एनिमल वेस्ट, उनका जो फॉडर होता है, उनका जो लिटर होता है, व्हाट इज मीन बाय लिटर, व्हेन द फोक ऑफ एनिमल इज, फॉर एग्जांपल शिप्स ले लो, व्हेन दे आर सिटिंग और बेडिंग, उनको जो हम बनाते हैं शेड में, उनके नीचे एक अलग टाइप का एक ग्रास होता है या फिर प्लांट जो होता है वो बिछाया जाता है. व्हाई? Because whenever they will release or excrete urine or dung, that will fall on that litter and that can whole serve as a source of manure, और जो हम decomposition के लिए उसको ले सकते हैं, that is called as litter. So plant waste, plant remain, crop remain, litter, leftover fodder, animal dung, urine, all these things are collected and dumped and allowed to undergo the process of decomposition, and that can be used as a manure after certain period of time. All these things, when undergoes decomposition, the microbes are feeding on them and release the nutrients, and these nutrients are also rich in, as I told you, it is rich in phosphorus, potassium and nitrogen. In short, कोई भी आप फर्टिलाइजर देखोगे ना तो उस पे जो बेसिक होता है, मैं फर्टिलाइजर बोल रही हूँ, इन पे जनरली इनका नाम लिखा होता है, बट NPK is very famous. Even you can ask your parents about it, that what is NPK and where we will get it, or in which fertilizer shop NPK based manure. So farmyard manure produced the manure which is rich in phosphorus, potassium and nitrogen. It is applied in the farm before we sow the seeds, and after that, after applying or spreading into the farm, we can allow the water to discharge into that farm, then we can go for the sowing. Clear? Then move toward second, that is compost. Composting जो है वो आपने शायद क्लास 6-7 में आपको एक एक्टिविटी थी, आई थिंक 7th में, that how to do composting on a small scale in the garden. Composting is also similar little bit with the farmyard manure, but in this, along with the animal waste, crop waste, household waste and sewage is also added. घर में जो भी कचरा निकलता है, कचरा, biodegradable waste, that everything is been collected and dumped into the big pit, बड़ा सा गड्ढा लेके उसमें हम ये गाड़ देते हैं, उस पे सॉइल डालते हैं, उस पे वाटर स्प्रिंकल करते हैं, so that it will undergoes the decomposition. ठीक है? What I said every biodegradable kitchen waste, leftover food of ours, of animals, of pets, dung, urine and fecal matter of ours also, animals also, everything that has been collected and dumped into the pit. When you have to go for the composting on a small scale or for your farm, what can you do? That you can see, you have to take one pit. Okay, that pit must be 4 to 5 meter long. Okay, 1.5 to 2 meter broad, or 1.5 to 1.8 meter deep. Then what you have to do is you have to apply the layer of this waste material. After that waste material, you have to apply the layer of soil. Okay, waste, then soil, then again waste, then again soil, and you have to cover with the thick covering. That covering may be a bedding of grass, or that may be gunny bags, that may be any naturally occurring things. Why I am saying like that? We cannot put concrete slab or something like that, because we have to sprinkle the water. Water हमें इसमें sprinkle करना है बार बार, frequently, after particular time interval, and that water should percolate, sip down to the last layer. ठीक है?
Why? Along with water, the air should also reach to the last layer because the bacteria which undergoes bacteria और the microorganism जो इनका डिकम्पोजिशन करते हैं वो दोनों टाइप के होते हैं, एरोबिक भी और अनएरोबिक भी। एरोबिक की जो है तो उनके लिए हवा की जरूरत है, दे नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट सच अ मटेरियल व्हिच कैन अलाउ द एयर टू पास थ्रू इट सो दैट aeration can takes place, aerobic respiration can takes place and the process of decomposition can be takes place easily. ठीक है? After minimum 21 days to 1.5 month you have to keep eye on it, means you have to keep on turning it, आपको टर्न करना है उसको कंटिन्यूली, रोटेट करना है। रोटेट मतलब हिलाते नहीं बैठना है। आफ्टर सम टाइम इंटरवल, आफ्टर once in a week you have to rotate so that lower layer will expose to the air, upper layer will goes down, and after that, after completing that particular time period, your compost is ready to use in the farm. In India, composting is done by many ways. You might have heard about vermicomposting. Vermicomposting is the method of creation of the compost with the help of worms especially. In India, we are preferring red worms. Red worms generally refer as called as earthworms. आपको साइंस में ये क्वेश्चन था 6th 7th या 8th में भी था फर्स्ट चैप्टर में कि why earthworms are referred as the friends of farmer. Why? Because it goes down into the soil, come up, goes down into the soil, come up. Why? Because it undergoes aeration, aerobic respiration, and they feed on all these or material. Okay? और इस पे फीड करके जो वेस्ट रिलीज होता है उनकी बॉडी से, दैट इज वेरी न्यूट्रिएंट रिच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दैट्स व्हाई एरिएशन होता है। ठीक है, रैट्स माइट जो उनको भी उन पे भी फीड करता है, और ये जो चीजें है एरिएशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये भी अच्छे से होती है, दैट्स व्हाई वी पीपल आर प्रेफरिंग द वर्मी कंपोस्टिंग यूजिंग रेड वर्म्स। ठीक है, एंड द लास्ट टाइप इज ग्रीन मैन्योर. इट इज प्रैक्टिस्ड बाय फार्मर इन द फार्म इटसेल्फ. How it is? Actually ये green manure होता कैसे है? ये manure कहीं बनाया नहीं जाता है. There are some types of plants or crops we can say. For example, lentil, cowpea, dhencha, sunhemp, ये सारे अलग-अलग टाइप के plants है. They are sown in the farm. Farm में उनको लगाया जाता है as a crop, okay? And they are watered. They are taking care like a normal crop. एंड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम स्पैन जब वो फ्लावरिंग के स्टेज पे आ जाते हैं तो अलॉन्ग विद द स्टैंडिंग क्रॉप, अलॉन्ग विद दिस प्लांट्स, द प्लाविंग हैज बीन डन. Plowing has been done and these are allowed to get merged under the soil. Soil के नीचे ढक जाते हैं वो. उसके बाद when they are getting submerged under the water, the field is irrigated. उसमें पानी छोड़ा जाता है. So what happens because of that? All these plants undergoes the decomposition and ultimately as it is green ही थे पहले वो, तो उनको decomposition के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. So that starts to get rot. सड़ते हैं वो, खराब होते हैं, कुचते हैं, डिकम्पोज होते हैं, न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, दैट इज गेटिंग एब्जॉर्ब इनटू द सॉइल एंड लाइक दिस फील्ड इज रेडी टू कल्टिवेट द प्रोफेशनल क्रॉप. प्रोफेशनल मतलब जिससे हम इकोनॉमिकल बेनिफिट पा सकते हैं, ऐसे क्रॉप के लिए आपका ये जो फील्ड है वो रेडी हो जाता है. सो ऐसे खेत में हम सारे सीरियल्स ले सकते हैं, पल्सेस भी ले सकते हैं. इट्स गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेज, bajra, jawar and maize as well. Seeds depend. There are different types of green manures. Accordingly, we can take different crops in that particular field. Clear? यहाँ तक अच्छे से पढ़ना और लिखना. Now we will talk in next session. We will talk about the fertilizer.